गुड आफ्टरनून, आदाब। मैं सनीउद्दीन ख़ान, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया। आज इस वक्त हम मौजूद हैं एम.एफ. हुसैन आर्ट गैलरी में। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन का सालाना शो, डिज़ाइन डिग्री शो, जो इस वक्त यहाँ पे चल रहा है। इसको इनाग्रेट हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर इकबाल सर ने किया और हमारी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर हिना ज़िया मैम ने किया। हम मोटिवेट एज अ फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन हम मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो सोशल इश्यूज़ के ऊपर काम करें और उस सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें थ्रू डिज़ाइन एंड डिज़ाइन थिंकिंग। तो कुछ इसी तरह का यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को डिज़ाइन थिंकिंग के थ्रू बच्चों ने बहुत ही क्रिएटिवली सॉल्व किया है। हाय एवरीवन, हम यहाँ पे एम.एफ. हुसैन आर्ट गैलरी जामिया मिलिया इस्लामिया में हैं and we are here to see design degree show by Department of Design and Innovation batch 22 to 24, and come, let's go talk to the students and explore their work. Hello, I have been visited a lot of shows of the department earlier, but this time I have seen a very good show. My name is Farha Elvi and I am a student of Master of Design, Jamia Millia Islamia, New Delhi. So my topic is impact of color scheme in public official CRM to improve accessibility. I have designed my website with the more focus of the color psychology, color scheme with the color blindness ability. Who has a color deficiency, they can also see the same color as of I am seeing the color without any color deficiency. My name is Mohammad Arbazuddin. I am final year student and my thesis project was on mobility around the campus. इसमें I have designed a vehicle, so it will help the students and the faculty to move around the campus freely. So जिन students के पास vehicles नहीं होते, गाड़ियाँ नहीं होती और large college campuses में एक point से दूसरे point जाने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए I have designed a three-wheeler vehicle on which they can stand like. It is perfectly balanced and it has 3 wheels, so anyone can enjoy the ride freely. Thank you. I'm Hafsa Khatun from Master of Design. It's my final year and this is my exhibition work. I have designed handbags for working women, which is inspired from craft across the world. Like this is from Palestine, Gaza embroidery, and I have used a material of sustainability, which is vegan leather. My final concept, which I have designed, prototype, and this one is Lucknowi chicken curry inspired bag, and shape is inspired from tulip, and this is geometrical shape. These all are my mock-ups. Basically, I want to establish my brand, which is Khas, and this is the series of my bags. Hello everyone, my name is Kafil Ahmed and I am the student of MDes in Jamia Millia Islamia, and my project was thesis like sustainable textile for women's and men's wear. यहाँ पे जो मेरा मेन इंटेंशन ये है कि जो सस्टेनेबल जो टेक्सटाइल है और नेचुरल डाई है एंड देन एम्ब्रॉयडरी, उसके थ्रू हम सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करें, अवेयरनेस क्रिएट करें। लाइक हमने जो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाया है, ये एक जो हमारा प्रोडक्शन वेस्ट होता है उससे हमने एक नई टेक्निक के साथ, लाइक दिस इज़ कॉल्ड द बेडिंग टेक्निक, उसके ज़रिए हमने इसको नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से जो प्रोडक्शन वेस्ट है उसको हमने क्या किया है, उस कपड़े को यूटिलाइज़ करने की कोशिश किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इतनी सारी चीज़ें हमने, ये हमारा टाई एंड डाई है, एक प्लेन शीट है ये, लाइक इस फैब्रिक से हमने ये सारे डेवलप किए हैं, अलग अलग जो टाई एंड डाई का टेक्निक है उसको यूज़ करके डिफरेंट शेड से, और ये सारे नेचुरल डाई है। ये पूरे हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ये मैंने खुद से किया, और ये अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये कांथा है, ये राजस्थान को रिप्रेजेंट करता है, ये कशीदाकारी है, ये आपको कश्मीर को प्रेजेंट करता है, ये कसूती है, देन ये फुलकारी, ये लाइक ये पंजाब का ये है क्राफ्ट है, देन एप्लीक है, और फिर ये इंटेंशन ये है कि सारे स्टेट वाइज के स्टीच को हम क्या करें, लाइक अपने कपड़े के थ्रू स्टोरी लाइन क्रिएट करके एक अवेयरनेस क्रिएट करें, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करें। सो दैट्स इट।
So hi everyone, my name is Zania Hassan and I'm the student of Masters of Design. So for my project, as you can see, this is my portfolio that I have worked on. These include variety of projects. So I will take you through the major project that I have done during my internship at Siemens Healthineers. So this was the main idea that usually people have their medical kits, but they don't know about that the expiry of the medicines they do have in their medical kits. So through this project I would be giving them the opportunity that the problem is that they don't know about the medicine, like what purpose it is for and what is the uses of that medicine and side effects of that medicine. So to cater that, so here I have proposed this, that you just have to scan, take out your mobile, just scan it, and you have to just put your scanner on and it will track the ribbon, like it will be in behind every medicine, and here the UI will show you that what treatment it will give that medicine is particularly for, and through the infographic it will be showing that what purpose of that medicine and what kind of medicine it is. Hello everyone, my name is Raza Abbas. I am a student of MDes, Jamia Millia Islamia. Today I have completed my thesis, and the topic of my thesis I study on feeding of stray dogs. So in this entire procedure I have developed a product. So this is my prototype that I developed, and the concept of this prototype or this product is based on drop plastic waste in this machine, and it will dispense food for stray animals like that cat, dogs, pigeons. मेरा नाम सुहील है, सेकेंड ईयर एमडेस। मेरा जो थीसिस प्रोजेक्ट है वो था सेमेंटिक एनालिसिस ऑफ ग्राफिक एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइंड एट सोशल बज। सोशल बज एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जिसके अंदर मैंने एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम किया था। मैंने अपने थीसिस में जर्नी ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग पूरी फ्रॉम द स्टार्ट से कवर की है। इसमें मैंने कुछ थ्योरीज भी कवर की हैं, जैसे कलर थ्योरी, कलर साइकोलॉजी, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, इंक्लूडिंग विद सम सेमेंटिक थ्योरीज, डिज़ाइन सेमेंटिक थ्योरीज लाइक सेमेंटिक एनालिसिस, सुजान मॉडल, पर्शियन मॉडल एंड गेस्टाल्ट थ्योरी। Hello, my name is Abdullah Zubairi and I am a student of Master of Design 4th year. So for my 4th semester thesis project, I did an internship at Confluence Consultancy, which is at Ishwar Nagar. So I was in the Department of Interior Design. So I did 2 projects in the 6 months internship. So these 2 projects were of mall. So one mall is in M3M Mall, which is in Noida, and its theme was modern luxurious. And the other mall was Tulip Mall, which is at Ranchi. So it was a little budget restrained mall, and it was modern classical themed. So I got the opportunity to design 2 malls altogether with contrasting themes and with some aspect which were contrasting in nature, such as the design styles of the mall, the project scale of the mall, and the budgetary constraints of the mall. Hello guys, my name is Mohammad Nabil and I am a student of Masters in Design from Jamia Millia Islamia. Previously I also did my bachelor's from NIFT Kangra, and I did my bachelor's in Design Fashion Communication. My experience says that I have also done some internships, as well as I did a job in Neurobit Technology, Singapore. So for the thesis project, we were asked to do a separate project or internship. So I chose to do an internship in an agency called Design Stencil. So this is my work, as you can see. So first of all, I was in the team of designing a logo, and this logo was inspired by Fulkari embroidery in Punjab, as well as the golden threads you see here are inspired by Sachi Kiran, which is made from gold wire. So this was the logo for House of Siddhus, which is a couture-based design. It's a proud moment for all of us because this is our first degree show for our department. So it's a very proud moment. और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में हम और फ्लरिश करें और अच्छे डिज़ाइनर्स और इनोवेटर्स हम अपने डिपार्टमेंट से इस देश को दे सकें, और ये एक कोशिश है। और शुक्रिया।